You don't need a job to move to Dubai anymore. You can start a Dubai business before moving to UAE. How are Indians starting Dubai businesses from India? How to start a company in Dubai from India? Why are remote workers moving to Dubai? ये कुछ questions हैं जिन्हें हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे. Hi guys, this is Vaishali. I'm an architect with 10 plus years of professional experience living and working in Dubai for almost 3 years now. Out of my 1500 plus successful Dubai mentorship sessions on TopMate, एक ऐसा टॉपिक जो ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा लोगों ने डिस्कस किया है अभी तक, एंड इट इज नॉट हाउ डू आई फाइंड अ जॉब इन दुबई, रादर इट इज दिस: वैशाली, आई डोंट वांट टू वेट फॉर अ जॉब ऑफर. आई वांट टू स्टार्ट समथिंग अदर देन अ जॉब. कैन आई बिल्ड अ बिजनेस इन दुबई बिफोर आई इवन मूव देयर? कैन आई स्टार्ट डूइंग फ्रीलांसिंग वर्क फ्रॉम इंडिया नॉट आफ्टर मूविंग टू दुबई? बिफोर कैन आई एक्चुअली गेट अ जॉब देयर? एंड यू वोंट बिलीव, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये क्वेरीज होते हैं फ्रॉम आर्किटेक्ट्स हु वांट टू स्टार्ट देयर ओन प्रैक्टिस, फ्रॉम इंटीरियर डिजाइनर्स who want to serve Dubai clients remotely, from people doing businesses and freelance work right now, sitting in India and other countries, who are getting paid in dollars and उन्हें कोई आइडिया नहीं है how to structure it properly. And अब जो मैं आपको बताऊंगी वो आपको कोई नहीं बताएगा. Everyone will give you generic advice online. So yes, you can absolutely build a business or start doing freelancing work even before you move to UAE. But obviously there is a right way and a wrong way to do it, and majority people are doing it the wrong way or not doing it at all. Today I am going to break this down completely. क्या actually possible है, कितना cost लगता है, क्या traps है जिनसे आपको careful रहना है, और कैसे आपको setup करना है, so that by the time you land in Dubai you already have something built. वीडियो पूरा जरूर देखना क्योंकि मैं आपके साथ में एक ऐसा trusted resource भी share करने वाली हूँ which I personally trust and recommend people in my mentorship sessions. And you guys already know I like to keep my videos very transparent, and जो भी information I share here, I share it based on my personal experience. So without any further delay, let's begin with the video. आप लोगों को already पता है when I moved to Dubai, I came on a visit visa and मुझे अपना first job offer 15 days में ही मिल गया था. But एक चीज जिसके बारे में मैंने ज्यादा बात नहीं की है, इनफैक्ट कभी इतना openly डिस्कस नहीं किया है, जो कि है जॉब के साथ साथ I was doing consulting on the side, जिसमें major thing was architecture and interior design consulting and also content work जो मैं YouTube और Instagram पे करती हूँ. So that aspect I structured independently. अब 1500 plus mentorship sessions करने के बाद, आपसे पर्सनली बात करने के बाद, मुझे एक चीज रियलाइज हुई है: आप में बहुत सारे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर जॉब्स भी कर रहे हैं और साइड हसल्स भी चल रहा है, वो काफी बेटर और स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग में ऑलरेडी है, और आप लोगों को ये पता नहीं है क्योंकि आपके पास एक राइट स्ट्रक्चर और राइट सिस्टम नहीं है. बेसिकली यू गाइज आर लैकिंग अ डायरेक्शन एंड अ रोड मैप. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स जिससे आपको और बेटर तरीके से समझ आएगा कि मैं कौन से प्रोफेशनल्स की बात कर रही हूँ. एंड दीज आर ऑल रियल यूज केसेस फ्रॉम माई मेंटरशिप सेशंस और फ्रॉम पीपल दैट आई नो. टाइप 1, architects and interior designers. Now there are so many of you काफी talented and experienced architects and designers जिनके पास already international clients हैं जो आपको अपने social media platforms के through approach करते हैं या फिर through connections और contacts. But एक common mistake जो आप लोग करते हो, आप formally उनके साथ काम नहीं करते हो. What I mean by this is कि आप काम complete करने के बाद informally उन्हें invoice भेज देते हो, no proper business entity, no legal protection, and that is how you lose your credibility with bigger clients because you can't give them a proper company invoice. And to be honest, similar was the case with me because I do a lot of collaboration and also freelance work and also consultancy work. So this is the problem I have always faced. मेरे पास कोई track नहीं होता था how I am generating invoices, no professional way of doing it basically. And I know आप लोग भी ये face करते ही हो. So बहुत लोगों को लगता है अगर आपको अपना practice start करना है UAE में, then you have to move here first. But that is not the case. Then type 2, import and manufacturing professionals. आपके पास इंडिया में already suppliers होते हैं from UAE, Europe और any other global location. आपके पास potential buyers भी होते हैं, but you are doing everything through personal accounts, WhatsApp and informal agreements. Now the problem is आपको पता होता है कि आपको proper legal entity की जरूरत है and still you don't do anything about it क्योंकि आपको लगता है कि सारा process is too complicated and too expensive to set up remotely. But ये बहुत ही common
myth है and it's not true. Then type 3 are people remote job professionals. And trust me, recently just a week back, someone we actually know moved to UAE. And wait, I will tell you the story later on. So ये basically वो professionals हैं who are working for US, UK or other globally based companies, getting paid in dollars, euros and whatnot, and working fully remote. Now they want to move to Dubai for the lifestyle, the tax benefits, the location, but they need a legal entity here to establish residency properly. And many of them are currently paying agents lakhs of rupees to do something that can be done in fraction of that cost, and that too with the right platform. And my friend which I was talking about, he also did the same thing through an agent and got it done. अब मैंने ये तीनों एग्जाम्पल आपको इसलिए दिए क्योंकि there is one thing in common in all three types. All are ready but you don't know where to start. Now let me ask you something directly. If you have international clients right now, even if it's just one client, and you are invoicing them from a personal account, what happens if there is a dispute? What happens when a bigger client asks for your company registration documents and you have nothing to show? I'm just giving you a scenario and ये होता भी है. This is a reality. So I'm not just scaring you guys for no reason. And here is another truth जो आपको कोई नहीं बताता when you plan to move to Dubai. A lot of people are building income streams in Dubai completely unstructured. No legal entity, no proper invoicing, no compliance at all. And no doubt it works until it doesn't. One client dispute, one bank query, one visa complication, and everything falls apart. See, the point is not to scare you guys, but UAE is one of the most business friendly environments in the world. 0% personal income tax, global credibility, access to international banking, strategic location for clients across Europe, Asia and the Middle East. But ये environment आपके लिए तभी काम करेगा if you are set up properly inside it. And you know what guys, company setup करना is not the hard part. The hardest part, the factors जो लोगों को ट्रबल करते हैं वो है अकाउंटिंग, कंप्लायंस फाइलिंग्स, द बुक कीपिंग एंड द एनुअल रिक्वायरमेंट्स. एंड यहीं पे आप बहुत सारी मिस्टेक्स करते हो एंड एंड अप पेइंग अ लॉट ऑफ मनी ट्राइंग टू मैनेज इट प्रॉपर्ली. अब हमने प्रॉब्लम तो डिस्कस कर ली, बट व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको एक बेस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, विच इज द प्री पोजिशनिंग विंडो. अब प्री पोजिशनिंग विंडो बेसिकली दुबई मूव होने से पहले वाला टाइम पीरियड है. एंड ट्रस्ट मी, इट इज द मोस्ट अंडर यूज्ड अपॉर्चुनिटी आई सी इन माई सेशंस. मेजॉरिटी लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं सिर्फ जॉब्स अप्लाई करने में और मनी सेव करने में, ऑफ कोर्स, क्योंकि यही एक आइडियल वे माना जाता है. बट दिस इज नॉट द स्मार्टेस्ट मूव. स्मार्टेस्ट मूव ये होगा कि आप इस विंडो को यूज करो टू स्टार्ट बिल्डिंग अ बिजनेस स्ट्रक्चर रिमोटली. अब मैं क्यों ऐसा सजेस्ट कर रही हूँ इज बिकॉज जब आप दुबई आते हो विद अ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड सेटअप, फिर भले ही छोटी सी कंपनी हो, आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे होते हो. आपके पास बिजनेस एड्रेस होता है, एक लीगल एंटिटी होती है, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और आप डे वन से ही राइट अप्रोच के साथ स्टार्ट करते हो. अब यूएई में फ्री जोन्स में 100% फॉरेन ओनरशिप अलाउड है. आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है टू इनकॉर्पोरेट. आप वर्ल्ड में कहीं भी हो, यू कैन रन योर बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. और ये कोई लूप होल नहीं है. दिस इज एग्जैक्टली हाउ यूएई हैज पोजीशनड इटसेल्फ टू अट्रैक्ट ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स. नाउ हु स्पेसिफिकली शुड कंसिडर दिस? फर्स्ट, freelancers and consultants in any field, design, architecture, marketing, finance. If you have skills and clients or the potential to get clients, a UAE entity gives you global credibility instantly. Second, remote workers employed abroad. I know many people who are on payroll with US and UK companies, fully remote, and they're moving to Dubai. They need a local legal structure for residency eligibility. Instead of paying an agent enormous fees to handle this, you can do it yourself through the right platform. Third, people who want to start a practice or studio, architects, interior designers, consultants who want their own brand, you do not have to wait until you move to UAE. You can start the paperwork now, have it ready, and walk into Dubai as a business owner. Now let's quickly talk about the reality check. Now I want to be very honest with you because that is how I operate. Setting up a company is just step one. It is actually the easy part. What most people do not prepare for is the ongoing responsibility. This is where things get expensive or complicated if you are not careful. आपको regularly bookkeeping करनी होती है, compliance filings करने की जरूरत पड़ती है, and depending on your structure, there may be VAT requirements. Annual reporting is also mandatory, and if you miss these, you can face fines or your company status can lapse. अब ये मैं आपको again डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ. I'm actually preparing
preparing you for reality. क्योंकि आप लोगों को लगता है कंपनी सेटअप हो गई, now everything is fine, but it's not. और आप लोग यहीं पे struggle करते हो, and running a proper business requires proper back-end support. And the main problem is nobody knows where to get this support from. What are the resources? What are the trusted platforms that people are actually using here? And this is exactly where and why I want to talk to you about the platform I'm integrating in today's video as a trusted resource. The platform is called Awesome. Why I specifically chose to work with them and not just any company formation service? Awesome has been operating since 2017 and they are established across Singapore, Hong Kong, UK and now UAE as well. Over 40,000 businesses trust them globally. ये कोई न्यू स्टार्टअप नहीं है. They have a proven track record across multiple markets. अब देख लेते हैं ऐसा क्या है जो Awesome को दूसरों से अलग और बेटर बनाता है. They are not just a company formation service. They handle everything. Incorporation, accounting, bookkeeping, compliance filings and all in one platform. Just one app, one team and everything is managed in one place. Right now the only way you can be part of Awesome is by clicking my affiliate link and book a call through Launch and Scale. Here you can fill in your details and choose a time slot. 16% discount will already be applied, so the team will be aware when they call you. If you are someone who's moving to Dubai or planning to, this is going to be extremely helpful for you. आप PRO एजेंट हायर करोगे, सेपरेट अकाउंटेंट हायर करोगे, सेपरेट कंप्लायंस कंसल्टेंट हायर करोगे, जिसमें इंडिविजुअली यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. और आजकल कोई नहीं चाहता कि एक टास्क कंप्लीट करने के लिए आप 5 अलग लोगों के साथ डील करो, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ योर टाइम, मनी एंड एफर्ट goes into it. All you want is one stop solution for everything and Awesome is exactly that platform. Awesome का app ये सब manage करता है. Now let me show you how. Okay, look at this. Your accountant is directly available on the app in the chat section. No separate emails, no follow-ups. Ask anything. Like if you need your incorporation certificate, just message them right here and you get a reply in 15 minutes. Your bank accounts connect directly to whatever you use. Everything syncs automatically. This is the transaction screen. Every transaction date-wise in one place. And this is what I love the most. Your accountant comments directly on each transaction. Everything happens inside the app. Invoicing is handled here as well. Like I mentioned, awaiting, drafts, paid, all tracked. Fill in the client name, add your item, enter the price, VAT is calculated automatically and your invoice is ready. And this is the live reporting dashboard. Cash flows, payables, receivables, profit and loss all in one screen. You can even download the full report as an Excel, fully compliant. That is awesome for you. One platform, everything handled smoothly. ये वही चीज है जो आपको एक एजेंट से कभी नहीं मिलेगी. एक कंप्लीट सिस्टम जो सेटअप के बाद भी आपके साथ रहता है. मैंने अपने सेशंस में लोगों से सुना है आप लोग लैक्स में पे करते हो एजेंट्स को जो उतना काम भी आपके लिए नहीं करते जो ऑसम करता है. और ज्यादातर ये एजेंट्स आपका सेटअप करवाने के बाद अवेलेबल भी नहीं होते. देयर इज नो सपोर्ट एंड यू जस्ट हैव टू चेज देम ऑल द टाइम. ऑसम पे आपको ऑनगोइंग सपोर्ट मिलता है बिकॉज देयर मॉडल इज बिल्ट ऑन लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड नॉट जस्ट वन टाइम फीस. सो आई पर्सनली रेकमेंड यू guys to check it out. Link आपको description में मिल जाएगा and there is also a discount that you can access through my link I have mentioned. You can check the pin comments as well. So let me bring this together for you. If you are sitting in India right now or anywhere in the world with skills, with clients or even just with a clear plan of what you want to build, you do not have to wait for a job offer to start your Dubai journey. The pre-positioning window is real. Please use it. Set up your structure now. Let Awesome handle the back end and arrive in Dubai ready to work, not ready to start. Now comment below, are you currently freelancing or consulting with no proper structure? Have you ever thought about setting up a UAE company but assumed it was too complicated or expensive? Are you a remote worker planning to move to Dubai? Because I have specific resource that might help you. Drop remote in the comments and I will send it to you directly. If you want a personalized roadmap for your specific situation, whether it is freelancing, business setup or career transition, my top mid link is in the description. I do one-on-one sessions and I will tell you exactly what makes sense for your case. Subscribe if that is what you're looking for and I will see you in the next one. Bye.